कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कम्युनिटी कंजर्वेशन सब सीखते हैं यहाँ पे। तो फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एडिटिंग तक भी सीख सकते हैं हम। एक्चुअली ये हम लोग का मतलब हॉल सब यहाँ पे हम लोग लर्निंग भी करते हैं, स्क्रीनिंग भी यहाँ पे चलता है। तो ये हम लोग का एडिटिंग रूम। How many editors are there? मतलब यहाँ पे हम लोग का मेक 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है और जो टेबल में हम लोग का मेंटर भी आ जाता है कभी कभी। हाँ करते रहे। हाँ बहुत सारे कितने फिल्म बनाए आपने? अभी तक हम लोग लास्ट बैच का था, तो अभी मैं बनाया मेरा इंटर्नशिप के समय में 3 फिल्म। 3 फिल्म, क्या क्या नाम थे उनके? एक है फार्म टू फूड के अंदर में बहुत वैक्सीनेशन ड्राइव का, और एक है आरंगे का कोहरा नाम बोल के, और एक है रबारी माई होमलैंड बोल के त्रिपुरा का। और ये फिल्म्स फेस्टिवल्स में हाँ, शोकेस करते हैं। हाँ फेस्टिवल में और यूट्यूब में भी होता है आपके ग्रीन हब चैनल पे। हाँ होता है, लेकिन और ये कौन उनका आपको मालूम है? ये हम लोग का सीनियर था, और ये एक हम लोग का अभी का वीडियो मेंटर है, वीडियो का एडिटिंग में मेंटर है। और ये भी हम लोग का सीनियर था, Imagine a place which has been generally locked down for so many years together. People would hesitate to come in. What is behind the gate? And the idea of mental health and mental illness is also such. And the opacity of treatment, opacity in terms of involving the family members in the treatment is so nil that it has been only what happens inside the door. We don't know. Some people get little cured, better, they come out and then they again go and all those things. And it has been very difficult for us to get people with less serious illness, when the illness has just started setting in, to come and seek help at the early stage. Because it's difficult for them to first of all figure out that I'm having some problem, and also the shame of even sharing, the family members not wanting to do anything, using the other local treatment or things like that. So in 2018 what happened, 10th of October is a big day for us. 10th of October happens to be World Mental Health Day. So that is the day where we have various programs. So that year and every year there is a theme, different theme, focusing on various aspects of mental health. So 2018 was the theme. The theme was young people and their mental health in a changing world. So we thought and we realized that it's important to understand the young people's mental health. And one way to do is that, especially for me, I was more interested because my own PhD work was also the kind of project that I was part of in Enhance was to do with young people, college, university going students, high school going students. Those who are those who need to take care of their mental health, because it was during that time mental illnesses starts setting in. Most of the major mental illnesses is where the adolescence and early adulthood, where we start seeing the symptoms. So that is one, and also the aspect of taking care of your health, mental health. You go to gym, can you not go to mental gym, or can you not form something like that? So we realized talking about illness is a barrier for us.
no, nothing inside the gate. But what if we start talking about what is going good in life? What is still you're able to flourish and there are stories to tell too, which is inspiring for others. So we found wellness or well-being, even if it is small pockets in our life, can be a good starting point for us to talk about mental health. Now, creating a space is also important. We can't call them and say, come here and talk about wellness. अरे भाई हमारा तो बोल रहा हूँ ना कि यहाँ से वहाँ जाके लोगों का मन खराब हो गया. तो typical जो rooms है, cubicles है, they are so away and concrete structure. So it was during that time we realized we need to create a space which will be very different from the image of the hospital. And not only different in image but also in spirit. My own training has actually drifted me away from the mainstream mental health treatment to a different kind of treatment or intervention, you can say, where the idea of expertise is questioned. So we believe in idea of expertise which is based on lived experience. So it's like I am expert of my own life because I have lived my life. What about going and working with the young people with this idea? It becomes easier and there's a huge thing that we can learn from them. And we are talking about wellness. No books, no courses talks about wellness, and I don't think anybody can ever come up with a curriculum of wellness. So it was in that context we created this space. This space we call it Wellness Hub because we thought initially that we will have a youth wing where we will deal with young people, early adulthood, even lower than that, adolescence. But we also realized that working with wellness should not be restricted only to young people, it should be the family. So we have another part of it which we thought of, which did not launch out, was Family Wellness Center, because young people are actually contextualized in family. And what about older people? Is wellness not a matter for them, relevant matter for them? Definitely. In fact, they have so much of wisdom to share about what has gone wrong, what has gone right. How about bringing them all together was the idea of Wellness Hub. We wanted to also take a different name. No clinic. Clinic means you have something wrong, you're coming. So that is the whole idea. And also learning from others who has gone downhill and getting their expertise and making it available for others. Yes. So essentially, what I am saying is, I build on what is good. I become conscious of what is not going well, and find a suitable space for enhancing the wellness level. That's what is the treatment. Now, we are also very particular about using the term treatment. Yeah. So if we use the term treatment, it is like backdoor se hum treatment ghusa rahe hain. But we felt, now I will take you inside. I have the key, a spare key that may help us to see. So this is where we enter. And this is the starting point. So here on the walls, we try to capture the nuggets of wisdom and things of young people and try to connect to them in various ways. तो ये जैसे कि कुछ drawing, हम लोग एक Arunachal ka young 18-year-old boy who is wheelchair bound needed a surgery. We wanted to help that person by buying all the paintings and drawings. तो हम लोग which he made. So हम लोग उसको print किए. Green Hub के द्वारा ये हो पाया. So that all happened in 2019. This place came up in 2019. These are some of the pictures of our initial days. जब हम अलग-अलग चीज करने का कोशिश कर रहे, हम गए थे कॉलेजेस में. ये टिपिकल जो एक कॉलेज का सेमिनार होता है, उसमें से हम देखें कि क्या चीज का जरूरत है, क्या कमी है. And after that you will see mostly it's a informal kind of setup. बच्चे को लेके हमारा ये चिल्ड्रंस पार्क है हमारे घर के बगल में. We were trying out something. The idea was Green Hub Festival मैंने बोला था 2019 उस टाइप का चीज था. So blue colored dress are the people who are hospital patients. So we wanted to have programs with them, a drawing competition,
but we changed the rule. We said that we would have we actually gave the name drawing competition with a difference. We paired up one of the staff or trainee with one of the patient and said, you are together in a team. Now you have to discuss equally and then see what you can come out of it. Baki time, the people here are the expert. They guide this people. But this moment, nobody is about somebody. These are college students. हम लोग स्वच्छता का कोई प्रोग्राम कर रहे थे और स्वच्छता का जो ब्रीफ है उसको हम बार बार ब्रेक करते. We decided that we will make your own cloth bag. कपड़ा लेके आए, सिलना, तो लड़का लड़की सब मिलके हम लोग एक साथ बैठ के सिलना कैसे सिलते हैं. So stitching, weaving, these are very very therapeutic parts. So we thought that something meaningful. उसके बाद लोग लेके जाओ बाजार में. Painting, drawing, music, वो बंदर की तरह पेड़ में लटका हुआ. This is where Nitin does this. When I was mentioning what Nitin does. So Nitin actually comes and does forest healing or forest making. Which whatever in the campus outside the campus. तो ये करते हैं. And all these things are actually designed by students of my department. Few students were very interested, keen. जो अभी तब MPhil कर रहा था, अभी कुछ लोग PhD कर रहा है. तो ये जब सब होता है ना तब is made up of bamboo. एकदम raw bamboo को काट के किसने बनाया? There was a staff member who was supposed to do this. तो उसके पास जब भी टाइम मिलता था वो देखता था हम लोग ऐसे कुछ अलग अलग चीज करने का मौका मिलता है, बनाने का कोशिश करते. तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो कभी कभी काफी टाइम होता है हाथ में, मुझे ये बनाने का इच्छा है. मुझे अगर कुछ चीज अगर लेके आप दोगे. So we got him things like this and we realized he has a talent to make this. अंदर अब देखोगे he has made beds. ये बेड बना हुआ है, सोफा भी बना हुआ है. इनका नाम है आइनुल. So he has been given the job of मतलब जंगल साफ करना. उसके बाद हमारे पास पोस्ट हुआ और जो जंगल साफ करते उसका ऐसे टैलेंट है. वो कैसे निकल के आया? ऐसे सारे चीज देखते देखते उसको लगा कि एक दिन में बोल दूं. और हमें पता था कि ये थोड़ा इंटरेस्ट लेता है. Then we realized that. So then what we used to do, we used to call him whenever we used to get time. हम लोग को दिखाओ क्या करते हैं. और हम लोग लोगों को जब लेक्चर देने आते हैं गिफ्ट के हिसाब से उनका बनाया हुआ छोटा छोटा चीज देते थे. और सिर्फ देते थे नहीं, गिफ्ट देने के टाइम आइनुल को बुला के बोलते थे उनके सामने कि हम ये गिफ्ट हमारे लिए स्पेशल है. देने के टाइम ही हम लोग को स्पेशल. एंड ऑब्वियसली आइनुल को अच्छा लगता था. So these are some of the other workshops and activities that we do. This is also a very important one. We are very very invested in young people's lives, especially those who think living life is difficult and think of ending their lives, use suicide. So we try to understand suicide in a different way. We try to expand the idea of living or ending life. बहुत easy है हम लोग के लिए बोलना सुसाइड क्यों करोगे, जिंदगी जीने का इतने कुछ है. And that stops the conversation. But what is that you are trying to get which you are not getting? Can we also see that? Can you share that beautiful image of the world that you are hoping to get which you are not getting? So that's where one of my students is doing a PhD in this area. Basically the idea of expanding the understanding of suicide and creating a peer group so that how we can understand each other, the peers, and create a community of solidarity rather than सब कुछ ये depression है भाई दवाई खाओ गोली खाने से. Third batch में क्या किया था? They had an assignment called Humans of Tezpur. Humans of Tezpur. This is an idea. चल रहा है काफी लंबा पुराना idea. Humans of New York, Humans of Bombay. So the idea is that how could you capture photos or stories of young ordinary people, but wherein hidden is the extraordinary stories or possibilities. तो यहाँ पर इसीलिए photos जो है ये these are all people in and around Tezpur. Many of them you will still see them. 5 years, 6 years पहले का photo खींचा गया था. And one liner story
for many of them are also written here. So we always believe in stories because stories we are born in stories. And then what if we can change some of the stories and make it more positive stories which we want to tell in the way we want to tell, which brings us the wellness or the experience of wellness and skills and strength rather than somebody telling my story on my behalf with my identity of an ill person. Because I'm not just an ill person if I'm having a mental illness. So उस कॉन्टेक्स्ट में ये सारे फोटोज हमने रखे और ये जो छोटे छोटे आप चिट देख रहे हो these are basically visitors coming spending some time. Especially interns आते हैं यहाँ पर तो हम उनके साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं. ये जो आपके साथ कर रहा हूँ बस और स्पेस बेसिकली अलग तरह से and we want them to interact with the photos, converse with the photos metaphorically. And it's like writing a small letter to this person. If you see something in the photo, if you hear something from the stories, and it touches you. You never know this person. We sometimes imagine that this person should be visit this place one day. But before that also, other people, how our lives are connected, and we're not isolated anymore. वो वाला आइडिया को इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस रूम का फोटोज को इस्तेमाल करते हैं. So that's the reason we see छोटा-छोटा चीज. इसमें जिसको आपने प्रोटैगनिस्ट बनाया हुआ है did that person come to you? Did you go and talk to that person? So this was an assignment. This was an assignment. So the fellows are taught कि भाई जाके अच्छा फोटो खींच पा रहे हो या नहीं, हम लोगों को एक प्रोफाइल बना के लेके आओ. And that happened in 2017. Even before this place came into existence. वो उनके कंप्यूटर में कहीं बैठा हुआ था, छुपा हुआ था. रीता को जब हम बोले कि हम लोग इस तरह का एक आइडिया करते हैं और एक रूम में अगर हम कुछ फोटोज लगा सकते थे जिसके द्वारा कहानी बोल सकते हैं या कहानी के साथ लोगों का जिंदगी को कनेक्ट कर सकते थे. रीता ने बोला हमारे पास ऐसा एक असाइनमेंट पड़ा हुआ है which needs audience. उसके बाद हम लोग डिस्कस किए and then it turned into taking print, creating stories and putting it up. तो इन लोगों का जब फोटो खींचा गया था तो इन लोगों को परमिशन लिया था फेलोज, थर्ड बैच का फेलो 2017 में, ये बोल के कि हमारा होमवर्क के हिसाब से कुछ फोटो खींचने की जरूरत है, आप एक फोटो में खींचना चाहूँगा और कहानी में जानना चाहूँगा. सो आवर ख्वाहिश ये है कि इन लोगों को लोकेट करना भी तो इतना इजी नहीं है कि दोस्त पीपल हु टेक इन फोटोज हैव लॉन्ग गॉन. बट क्या होता है कभी कभी हमारे यंग पीपल तेजपुर के लोग आके बोलते हैं इसको तो मैं जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये दोस्त का अंकल है. तो तब हम क्या करते हैं उनको बोलना हो कि you please tell this person to contact us or can you help me getting in touch with them. हमारा ख्वाहिश ये है कि कभी अगर इन लोगों को यहाँ आके हम थोड़ा सा ऑनर कर सकते हैं, एक कप चाय पिला सकते हैं, उनका कहानी सुन सकते हैं और गहराई में सिर्फ जो फोटो है और जो 2 लाइन है उसके आगे जाके. तो ये क्योंकि हमें इन लोगों का फोटो के द्वारा यंग लोग जो आते हैं उनका जिंदगी की कहानी निकल के आना शुरू होता है बिकॉज दे फील कनेक्टेड. लेकिन इनका कहानी अभी हमारे पास उतना क्लियरली नहीं है, जितना है वो है. थीम बेस्ड है, अलग अलग. सो हमारे पास स्पॉटलाइट भी है. So this is the exhibition that you are seeing is the last batch of Green Hub Fellows. Last year World Environment Day हमारे लिए बहुत important day होता है. Thanks to Green Hub we have realized the importance of it.
we thought that we'll have a exhibition of World Environment Day. तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हम सारे फेलोज को बोले कि आपका कोई एक फोटो which conveys the idea only one earth. We do not have second earth or the third earth. We have only one earth, which was the theme of the world environment day. उसको दिमाग में रखते हुए क्या एक फोटो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो जो हम दिखाएंगे. And so they have given only one earth. One of the photos from their internship place जहाँ पर वो लोग काम कर रहे थे उस समय, and also one liner कहाँ है क्या चीज़ है क्या बोलना चाहते हैं ये. So that is the thing. And you will also see the judges' comments in the small note sheet, especially वो yellow वाला sheet इधर भी है. ये judges' comments बहुत interesting है. इनका handwriting देख के आपको पता चलेगा कि इनका humor generally art से बाहर के आता है. तो हम लोग जज के हिसाब से कैंपस के बच्चों को और बोले कि भाई देखो कौन सा फोटो तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है. And then we had a conversation with the photographers. वो दादा दीदी जिन्होंने ये फोटो खींचा है and the young people. So they shared कहाँ पर जाके कैसे ये फोटो खींचा और ये इम्पोर्टेंट है. So that's where we have a conversation rather than giving a lecture कि भाई environment को बचाओ ये करो. यहाँ पर हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ इंटर्न्स आके आर्ट को जो भी चीज़ हाथ के पास मिलता है उसको करते हैं. ये स्टोन्स कंस्ट्रक्शन चलता है, वो स्टोन्स को इस्तेमाल करते हैं. रिसेंटली हम लोग स्टोन आर्ट या पेबल आर्ट जिसको बोलते हैं उसको हम कोशिश कर रहे हैं. हमारा एक साइकियाट्रिस्ट है जो गोली भी देता है और पेबल आर्ट भी सिखाता है. हमें पता नहीं था तो वो साइकियाट्रिस्ट को बोले आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो. तो वो चीज़ हम लोग को पता है कि नहीं हमें ये पता है. सो अनदर साइकियाट्रिस्ट वेरी गुड एट बेकिंग. हम लोग को बोले और वो बोलती रहती है मैं जब बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ तो बेकिंग करता हूँ, बेकिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैंने बोला अब हम लोग को सिखाइए खिलाइए. हम लोग बेकिंग करते हैं. सिर्फ बेकिंग नहीं, हमारा कुकिंग इज अ पार्ट ऑफ. हम लोग बातचीत में बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं काफ़ी बार हम लोग या लोगों को करवाते हैं व्हाट इज योर फेवरेट थिंग, व्हाट इज द फूड दैट यू मिस व्हिच हैज बीन मेड एट होम बाय योर मदर और समबडी एल्स. खाना वाना बनाना ये सारे प्लान में है. तो सो दिस इज वन एंड देन यू कुड सी सम ऑफ द बुक्स. So this is a small section of this hall where we are keeping books. Children's books are very very important thing for us क्योंकि children's books are in a way gateway to mental health. बहुत सारी चीजें जो हम ऐसे बातचीत नहीं कर सकते स्टोरीज के द्वारा, चिल्ड्रंस की स्टोरीज के द्वारा कर सकते हैं. And we have named this library in honor of one of our students whom we lost due to cancer. जब हमारे यूथ के साथ just she was a part of it initially. तो अरुणाचल की है तो उनका ट्रेडिशन, उनका ट्राइब का ट्रेडिशन के हिसाब से क्या होता है they give away all the items, they don't take back anything. So हॉस्टल में जो भी आइटम था स्पेशली a lot of stationery items बर्तन वगैरह हॉस्टल में रखी थी, वो सारी चीज यूथ वेलनेस को डोनेट किया. फैमिली मेंबर ने उनका क्लोज फ्रेंड्स को बोला कि तुम लोग डिसाइड करो क्या करना है. क्लोज फ्रेंड्स दे थॉट कि तब हमारे एक्चुअली ये सारी चीज़ सरकार खास कुछ करता नहीं है, सिर्फ चीज़ दिया है, सामान वामान हम लोग अपना पैसा मिला के जोड़ के डोनेशन के हिसाब से करते हैं. सो दैट वाज द फर्स्ट नोटेबल डोनेशन ऑफ दैट फैमिली टू अस. तो दे विजिटेड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आफ्टर 3 years because they were not able to come back. It was so traumatic for the whole family. And we all sat here, and by that time when they saw that we have a library in honor of their daughter or their sister, it was a very different feeling for them. So they have pledged support for this library. So ये library का एक movement है जिसका नाम है free library movement, जो communities में library पहले चलता था, अभी अब इतना नहीं चलता है, लेकिन असम में भी ऐसे कुछ लोग शुरू किया है. And we are in touch with them. So we are inspired by their work. And also we have realized कि mental health को कैसे हम किताब के द्वारा आगे ले जा सकते हैं. And we use it in a significant way. ये जो posters आप देख रहे हो, ये बहुत सारे छोटे छोटे programs जब हम करते हैं पिछले किए हैं उसका एक एक नमूना. तो we also take time to design the poster well.
हमारा कोई दो चार एक आध लोग हैं, स्पेशली कलकत्ता का एक यंग लड़की है जो बहुत अच्छा इलस्ट्रेटर है, तो वो बना के देती है हमारे ये सारे प्रोग्राम, हमारे पोस्टर। तो हम लोग पोस्टर प्रोग्राम के बाद एक कॉपी रख देते हैं, स्पेशली जब हम प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं ना, तब हम इसको देख के तसल्ली होता है और दुख कम होता है कि नहीं, एक ज़माने में किए थे, आप और भी अच्छा टाइम आएगा तो हम करेंगे, दोबारा करेंगे, अभी कर नहीं पा रहे हैं। You could see walls which were drawn in 2019. उसके बाद थोड़ा बहुत और भी हम लोग ऐड किए हैं। इसको वॉल आर्ट बोलते हैं, लिविंग आर्ट, वॉल आर्ट। कोई एक जना शुरू किया, उसके बाद कोई और जने आके उसके बाद उसको ऐड करता गया, कुछ नया चीज़ बनता गया। सो दिस द आइडिया ऑफ नॉट लिविंग द वॉल्स नीट एंड क्लीन, थोड़ा सा कुछ करेंगे एंड थ्रू दैट वी विल एक्सप्रेस आवर सेल्फ। तो वही आइडिया लास्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में आया था। हम लोगों को लगा कि एक स्टेज चाहिए हम लोग के लिए, थोड़ा स्टेज जैसा कुछ चाहिए, और नेचर के अंदर अगर स्टेज हो तो अच्छा होगा।